Hello students, my name is Ankur. I have done AmTech from MNIT Jaipur in 2017. After doing AmTech, I am this teaching field. So I am going to start a new subject called engineering mechanics. So let's begin with the first lecture. The first term, the very first term, we will see there is mechanics. So what is mechanics? Mechanics is the study of the motion of the rigid body under the action of the forces. So कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब इस पे कितनी फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा हो, 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 राइट? रिजिड बॉडी विच इज मूविंग और उस पर फोर्सेस लग रहे हो, राइट? अब कोई बॉडी है, मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? बिकॉज इसमें कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, राइट? समझो, अगर ये बॉडी यहाँ पे है तो यहीं पे है, अनटिल इसको इसमें फोर्स लग जाए, राइट? सो देयर शुड बी सम एक्शन ऑफ फोर्सेस टू मूव दिस बॉडी, right? So mechanics, what is the mechanics? Mechanics is the motion, like the study of the motion of the rigid body under the action of forces. Like कोई बॉडी है जो मोशन में है, तो मैकेनिक्स क्या है? कोई भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना और मोशन क्यों हो रहा है उसको देखना, उसके पीछे क्या फोर्स लगा हुआ है, उसकी जब मोशन रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, क्यों फोर्स लगा हुआ है और रोक रहा है उसको. सो दिस ऑल थिंग्स related to the motion of body, it's come under the mechanics. So there is a one important word in it, that is the rigid body. What is it? Rigid body. तो rigid body क्या है? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे अगर rigid body ना तो कोई भी अपने फोर्स लगाया तो क्या होगा? सरफेस को डिफॉर्म कर देगा. दैट मीन्स अगर रिजिड बॉडी नहीं होगी तो क्या होगी? बॉडी डिफॉर्म होगी. डिफॉर्म बॉडी में क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ फोर्स है, राइट? हमने यहाँ पे फोर्स दिया और ये बॉडी डिफॉर्म हो गई. बट रिजिड बॉडी में क्या होगा? मैंने रिजिड बॉडी को फोर्स दिया, आइदर ये मूव करेगी या फिर ये स्टे करेगी, बट बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा. अब ये स्टे कर रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसमें कहीं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्टे करेगी, राइट? अगर इसका फ्रिक्शन ओवरकम कर जाएगा तो ये मूव करना शुरू कर देगी, राइट? बट बॉडी के अंदर फोर्स नहीं जाना चाहिए. मतलब जो बॉडी हमें फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी के इंटरनल फोर्स में नहीं जाना चाहिए, राइट? मतलब वो उस फोर्स में काउंट नहीं होना चाहिए जो डिस्प्ले नहीं हो पाया हमें, जो बॉडी के मोशन में काउंट नहीं हो पाए. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. दिस टर्म mechanics is further have the two branch. First, that is the statics. That means a body which is in the static state, rest state. Next, dynamic. That means any body which is in the motion. Okay, dynamics. So let's try the condition. Static means the velocity should be 0 or the body is at rest. Dynamics means the velocity is not 0. Sorry to write it wrong. Velocity is 0. Right. Now, in this, what we are going to discuss in statics, we will first deal with the statics. In static, we will first see the equilibrium questions, and we will also see what are the conditions for equilibrium. Like if a body is in equilibrium, so what condition should it fulfill to come under this state, equilibrium state? We will also study in statics, that is plane of truss. Okay, or plane of trusses. For the completion of course, we'll also study in this principle of virtual work.
Okay. So in this statics, we will cover this all this portion. And in dynamics. So what is dynamics? Any body which is moving, it's in the dynamic state. So here, first, we'll classify it further, then we will see what we'll going to learn in this. So dynamics is further divided into branches. That is, first is kinetics. Sorry, kinematics. Excuse me. Kinematics. And the next is kinetics. Okay. So for the definition, let me take this to the fresh page. Yes. So what is kinetics? Kinetics is the branch of classical mechanics which describes the motion of a body or a point, a body and a point, and system of bodies without the consideration of the cause of motion. That means कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, बट ये क्यों मूव कर रही है इससे हमें मतलब नहीं, राइट? तब जो भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसके मोशन की, बट इसके कॉज नहीं देख रहे हैं, तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर आती है? इट्स कॉमन द काइनेमैटिक्स. बट अगर हम इसके कॉज ऑफ मोशन को देखें, दैट मीन्स इस पे कहाँ कहाँ कौन कौन सा फोर्स लगा है जिसकी वजह से इस बॉडी का मोशन हो रहा है, दैट मीन्स दैट स्टडी of the motion of the body, okay, that comes under the kinetics, right? So the word here, there is one word here, the motion of point, right? The motion of point. So what is point? Point is nothing, it's a body which is look like a point, right? A body which look like a point, that's called the point. Simple. अब इसकी what is the important, मतलब what is the attribute of this thing? Point. Why? Because इस पे कोई भी आप फोर्स लगाओगे तो कहाँ लगेगा? पॉइंट पे लगेगा, राइट? अगर मैं ये बॉडी ले लेता हूँ तो जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा इसके अलग अलग पॉइंट से फोर्स लग सकता है, अलग अलग जगह फोर्स लगता है, बट जो पॉइंट बॉडी है इस पे एक ही पोर्शन है, सिर्फ ये इतना, इससे फोर्स लगेगा. आपने शायद पढ़ा होगा कि कोई बॉडी है, उस पर फोर्स हम कहाँ माउंट करते हैं? सेंटर ऑफ मास पे. ओके, दैट इज आल्सो अ पॉइंट. वो भी एक क्या है? पॉइंट है. ठीक है, तो फर्दर हम अभी ये देखेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास पे सारे पॉइंट लेते हैं. सो पॉइंट बॉडी की खूबी ये है कि वो पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ मास है, राइट? सो पॉइंट बॉडी, दैट मीन्स अ बॉडी विच हैविंग अ वेरी 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 लेस डायमेंशन और नेग्लिजिबल डायमेंशन. ओके, और पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है. ओके, सो पॉइंट बॉडी ये होती है. Okay, so now we will see the what terms we will going to have in this kinematics and the kinetics. So in kinematics we will deal with the displacement thing, or we also can say the position vector, velocity vector, acceleration, right? But we will not consider here the forces, torque which mounted on the body, but we will consider the position vector, velocity vector, acceleration, forces, torque in kinetics, because it consider the cause of motion, and this don't consider the cause of motion. You can also recognize these two terms, like you can differentiate with this term ma, right? The ma, like the person who's always say ma, that means he's a selfish person. So he doesn't look the cause why he's doing things or why he just ignoring things. Okay, so this ma is a selfish, and this come under the kinematics. So which does not does not consider the cause of motion, right? So you can recall this ma comes under the kinematics, so it does not consider the cause because of egoistic thing, right? You can just I just correlate things to for the remembrance, right? So next, okay, yeah. In dynamics, what we will study, the first thing we will see motions which are linear, that means translation motion.
Next, we will see circular motion or rotatory motion. We will see the problems on friction. We will also see the questions related to the collision, which comes under the conservation of momentum, collisions. We will see the rotatory motion, not rotatory, rotation motion, rotation. And last, we will see the general motion. General motion includes linear as well as rotation motion. That is the general motion. And the last, for the completion of this course, we will also see the work energy theorem. Work energy. Okay, I think this part you won't be able to see. So I just click this here. Okay. So this is the sixth. This is the right. So this is the sixth part. We will going to see this under the dynamics, and this is the seventh part. Okay. So next, move to our next part. So start with a very basic definition of mechanics, that is force. We all know about force. What is it? It is the action of one body over or on another body. Like there is a body A and there is a body B. Body A ने force दिया body B को, right? मतलब उसने कुछ भी किया, धक्का दिया तो फोर्स लग गया. बॉडी ए ने बॉडी बी को धक्का दिया तो फोर्स लग गया. तो दैट इज कॉल्ड द फोर्स. क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई भी एक्शन करती है तो फोर्स लग जाता है. अच्छा, अब जब मैंने लिखा क्या एफ ए बी, बट थोड़ा सा ये गलत लिख गया. इट शुड बी एफ बी ए. It should be FBA. So what is FBA? It is a force applied on body B by body A. And what is this? This is force on body A by body B, or the force or force on body A by body B. Okay, और ये भी ऐसे क्या होगा, ये होगा force on A, or force on B by A. ठीक है. Okay, so to define the force, we need three things. The first thing, because we all know the force is vector quantity, so we will need first thing, that is the magnitude of the force, right? We all know, and the unit of force is Newton. Second thing, we need the direction because it's a vector quantity. Okay, and the third, which is very important thing, it is called the point of action. ओके, अब तक देखो आपने दो चीज तो पढ़ी रखी है कि ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये तो होगा. व्हाई? बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट ये तीसरी चीज क्या है जो समझते हैं. देखो, लेट मी लाइक इरेज दिस. देखिए, यहां पर सपोज करो एक बॉडी है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, और ये हिंज है. और ये हिंज कैसा है? स्मूथ हिंज है. चलो ये स्मूथ और रफ की बात नहीं करते, अभी सिंपल एग्जांपल, ये हिंज है, राइट?
दिस इज द हिंज, और कहीं पे यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ, ठीक है। इस फोर्स का मैं नाम देता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, सपोज करो ये बॉडी थी, ये बॉडी यहाँ हिंज है, और इस पे फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स लग रहा है इधर। ये फोर्स लगते ही मालूम पड़ रहा है कि बॉडी इस हिंज के अबाउट कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं मालूम होता, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मुझे नहीं मालूम होता कि किस पॉइंट पर, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पर लग रहा है, तो क्या मैं ये इमेजिन कर पाता कि बॉडी इस टाइप से मूव मोशन करने वाली है? नहीं कर पाता। अगर आप मुझे बोलते थे कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्या मुझे सिर्फ इस वेक्टर क्वांटिटी से ये मालूम पड़ जाता, से मालूम पड़ा मैंने ये फोर्स यहाँ उठा लिया, लो सेम डायरेक्शन है, बट अब क्या होगा, अब ये उल्टा रोटेट करेगा, राइट। सो पॉइंट ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ फोर्स। तो फोर्स किस जगह कहाँ लग रहा है, इट्स हैव इट्स मीनिंग कि फोर्स कहाँ कैसे लग रहा है। इट मे गिव सम टॉर्क because of misplacing the like position. Okay, so we have discussed the force, so we will move to the type of force, right? So in this diagram, let's see the first diagram. The first diagram, in this, the body, this is the body which have the mass m, right, and its place in the gravity of earth. Okay, so because of the gravity of earth, it having what, it have the weight which acts downward, right? And what we will call this weight, क्या इसकी वैल्यू होगी, we all know it's m into g, and this weight is called as force of gravity. Okay, so force of gravity, right? मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर अर्थ पर कोई भी मास है तो उसका एक वेट है, दैट इज mg, mass into acceleration due to gravity, and this force is called gravity force, right? Let's move to the next force, normal reaction. So what is normal reaction? Let me move this a little bit. Okay, so what is the normal reaction? ये याद रखना, हमेशा normal reaction जो act करता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये इसको रखा इसके ऊपर, तो इस फोन पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, जो ये सरफेस है यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, उसके नॉर्मल इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर, फर्स्ट थिंग, always acts to surface, right? Let's see कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है। सो अच्छा लगेगा, इसको बॉडी पे लगेगा, अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी के लिए, अभी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि वही थर्ड लॉ की वजह से इस सरफेस पे भी लगेगा, बट वो बाद में बात करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इस बॉडी पे जो फोर्स नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा है इस सरफेस के थ्रू, वो कैसे लग रहा है और कहाँ लग रहा है, इस बॉडी पे, राइट। सो बिकॉज दिस बॉडी इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो मैं ये बोल दूंगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लग गया है, राइट, एंड दिस फोर्स आई विल राइट एज एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड। दिस कैटेगरी इज वेरी रैंडम, इट्स नॉट लाइक यही होती है, राइट। थर्ड इज hinges, hinge force या hinge reactions, but hinge reaction. So what is the hinge reaction? पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे hinge कहाँ है। This is the hinge part, ये hinge है,
अब जब भी हम बात करें किसी हिंज की, तो आप जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं इस पर, दैट इज वन इज दी वर्टिकल। हमेशा जब भी हिंज होगा तो आप दो फोर्स एक्ट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, एंड वंस वन फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। Okay, we will write this as FV as vertical force and FH for the sake of horizontal force। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी हिंज होगी तो उस पर हम दो फोर्स एक्ट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, एक वर्टिकल को जा रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल को जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब जो FBD होगा उसमें हम ये डाल देंगे दो फोर्सेस। ओके, और जहां भी ये भी रिएक्शंस हैं, इसे रिएक्शंस बोलते हैं, तो ये इसमें पे दो रिएक्शन हो गई, इसे बोलेंगे हिंज रिएक्शन, राइट। सो let's move the other forces. Now, this is the force which I count as for friction. Here we will see the friction force. Friction. So, friction, that means जो ये सरफेस है वो सरफेस कैसी है, सॉरी, सरफेस कैसी है, इट्स हैविंग सम रफनेस, राइट। और ये आपकी जो इंक्लाइन सरफेस है आपकी फिक्स्ड है, और इट शुड बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने, ओके। तो यहाँ पर इसका मास मान लेते हैं, इट्स हैविंग दिस बॉक्स हैविंग द मास m, राइट। और नाउ वी विल सी, we will take this body down and we will see what should be the FBD of this diagram, this block, right? So let's see the FBDs. Okay, first is the normal reaction which act on the body, right? This is the normal, and the next, because of gravity, we have learned the gravity. Because of gravity, from the center of mass, the force mg will act, right? और कौन सा फोर्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट्स हैविंग द फ्रिक्शन सरफेस, सो एक फोर्स लगेगा, कहाँ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ पे, द फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। पता है आपको, ये फोर्स है, मतलब बॉडी, ये सरफेस है, फ्रिक्शन सरफेस है, मूव कर रही है, बट इस ये रुक क्यों गई, मैंने फोर्स दिया, ये रुक क्यों गई, वाई, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्यों, कहाँ लगा, कैसे लगा, फ्रिक्शन लगा जो सरफेस कांटेक्ट में थी, ठीक है। डायरेक्शन क्या थी फ्रिक्शन की, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन होगी इधर, राइट। बॉडी को मैंने फोर्स दिया इधर, रुक गई, फ्रिक्शन कहाँ लगा, इस सरफेस पे लगा, कहाँ लगा, इस साइड लगा, राइट। तो कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा फोर्स, और इट शुड बी अपोजिट टू द मोशन ऑफ, क्योंकि देखो इंक्लाइन बॉडी है, इंक्लाइन बॉडी है तो ये जाएगी नीचे जाना, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये पीछे, मतलब फ्रिक्शन इसको पीछे ढकेलेगा, और जो उसका मोशन है उसको पीछे ढकेलेगा, जिसकी वजह से इसकी जो एक्चुअली स्पीड है वो मतलब नहीं आएगी, कुछ कम स्पीड हो जाएगी, राइट। सो दिस शुड बी द friction force which act. I'll say this friction force F, or we'll know this friction force is equals to value mu into n, mu into n, friction force mu into n. That means it is, this is the coefficient of friction, coefficient of friction, right. And this is, we have learned this in the second part,
force, normal, reaction. Right? So this is how we will define the friction force. Okay, so let's move to the next. This is the tensions in a string. We'll first consider the case string 1. This is the string. So समझते हैं क्या सेटअप है. सेटअप ये है कि ये आपका कोई सीलिंग है, सीलिंग, ओके, विच इज फिक्स, और इस पे कोई एक थ्रेड स्ट्रिंग लगा हुआ है, एंड दिस थ्रेड और स्ट्रिंग विच इज हैविंग zero mass, okay, or we can say this string is massless. This is string which we will consider is massless. Why we are considering this? Because अगर आपका जो स्ट्रिंग है मासलेस नहीं होगा तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो अलग अलग होगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस, टू एलिमिनेट दिस different tension at different point, we will consider the string as massless. आप सिंपल से मान लो कि आपका एक बहुत पतला धागा है, वो एक्ट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग विच इज massless and inextendable. मतलब वो खिंच नहीं सकता, इट्स नॉट इलास्टिक, it inextendable. राइट? इनएक्सटेंडेबल, ये दो चीजें हैं स्ट्रिंग के लिए, हम अजम्पशन लेते हैं, राइट? सो सेटअप क्लियर है. आपका एक सीलिंग है, सीलिंग पे आपका एक थ्रेड लाइक आपका स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से कोई भी एक मास अटैच्ड है, एंड आई विल कंसीडर द मास ऑफ दिस इज m, राइट? अब हमारा जो पर्पस है फॉर दिस कि टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो उनकी डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, ठीक है? फिर समझते हैं इसको. लेट्स कॉपी इट डाउन. सपोज करो ये स्ट्रिंग को मैंने बीच में से काट दिया. अब क्या होगा? स्ट्रिंग को बीच में काट दिया, क्या होगा? ये मैंने स्ट्रिंग को बीच में काट दिया, और बीच में क्या था? वेट लटका हुआ था. आप इसे काट दोगे तो क्या होगा? वेट नीचे गिर जाएगा. अब जस्ट एक इंस्टेंट पहले सोचो कि जब मैं काटा था उससे पहले क्या हो रहा था? यहाँ का जो धागा था वो इस मास को लटकाए हुआ था. वाई? दैट मीन्स जो इसका मास था, जो इसका सॉरी वेट था, वो कौन होल्ड कर रहा था? वो ये पार्ट होल्ड कर रहा था. और कितना वो फोर्स दे रहा था उसको उसको होल्ड करने के लिए? वो फोर्स दे रहा था mg, बिकॉज इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? दैट इज mg, राइट? तो यहां पर एक फोर्स था, उसको मैं बोलूंगा टेंशन. टेंशन इन दी स्ट्रिंग, वो फोर्स कितना था? वो फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, राइट? अच्छा, ये बात हो गई. जो हमने ये इसको हमने यहां से कट किया. कट करने के बाद जो ये पोर्शन था, मतलब जो कट किया, कट करने के जो नीचे वाली जो थ्रेड थी उसमें जो टेंशन थी वो कहाँ थी? ऊपर थी, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, ये टेंशन कटी और देखना ये जो थ्रेड है ये तुरंत क्या होगी? पीछे ऊपर की तरफ भागेगी, राइट? क्या हो रहा था? पहले जो टेंशन थी, जो पहले जो टेंशन थी उसमें क्या था? वो होल्ड कर रही थी. जैसी वो रिलीज हुई, वो रिलीज हो गई, मतलब उसमें जो मास था वो रिलीज हो गया. दैट मीन्स अगर ये फोर्स इधर खींच रहा था इस टेंशन की वजह से, राइट, जो सीलिंग थी, सीलिंग को कुछ रिलीफ मिला, राइट? सीलिंग को कुछ रिलीफ मिला. दैट मीन्स उससे पहले, कटने से पहले जो फोर्स लग रहा था, जो स्ट्रिंग लगा रही थी किस पे? सीलिंग पे. वो कहां लगा रही थी? डाउनवर्ड. या हम ये बोले ये स्ट्रिंग ना हो, मास लटका हुआ है सीलिंग पे, तो सीलिंग पे फोर्स कहां लगा, क्यों लगा रहा है? क्योंकि मास लटका हुआ है. तो कितना लगा हुआ है? वही फोर्स लगेगा जो आपका मास उसको होल्ड करने लगा था. दैट मीन्स जो यहां पर टेंशन आएगी दैट इज ऑल्सो टी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. इसको खींचेगी ये, बिकॉज सीलिंग आपकी अटैच थी, तो सीलिंग को जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा बिकॉज ऑफ द मास, राइट? तो दिस वे वी विल ऑलवेज डिवाइड टेंशन जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? टेंशन लगती है. हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है, एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस टेंशन. जैसे ये एक डायग्राम है और ये एक पुली है, राइट?
और ये पूरी एक स्ट्रिंग इसमें लगी हुई है. लेट्स बट दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. ओके, ये पूरी एक स्ट्रिंग है. ठीक, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी, सपोज मैं अभी फॉर द सेक टी ले लेता हूँ, बिकॉज ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो पूरी सेम है, तो सिंगल स्ट्रिंग हैज सिंगल टेंशन, बिकॉज वो क्या है, इनएक्सटेंडेबल है और मासलेस है. अगर ये कंडीशन है तो स्ट्रिंग कितना भी पुली लेके चले जाए, और अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो उस पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी, एक ही, T1 T2 नहीं होगी, एक ही टेंशन होगी. जितनी टेंशन उसकी यहाँ पर है उतनी टेंशन इसकी यहाँ पर होगी डेफिनेटली. ठीक है, ओके, तो हमें को ये बताना था. हाँ, अच्छा, इस केस में ये चीज और देख लो, अगर टेंशन यहाँ पर ये है तो इसका जो FBD होगा काट के देख लो, मतलब पुली पे कितना टेंशन लग रहा होगा. अगर FBD में बनाऊं पुली का तो कैसे बनेगा, लेट्स सी दैट. ये हटा दो, ये हटा दो, राइट. तो जो टेंशन थी उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड. अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा T. ठीक है, और ये T क्या कर रहे हैं, पुली है, पुली को खींच रहे हैं दो जगह से, पुली को खींच रहे हैं, यहां से भी T से खींच रहे हैं, यहां से भी T से खींच रहा है. और ये जो ऊपर कनेक्टेड है तो इस पे कितना फोर्स पड़ रहा होगा, भाई मैं ऐसे भी खींच रहा हूँ, मैं ऐसे भी खींच रहा हूँ, तो जो ऊपर फोर्स है वो कितना लगना चाहिए, यानी ऊपर जो ऊपर वाले में जो टेंशन है, ये भी तो स्ट्रिंग है, इसमें कितना टेंशन लग रहा होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ से भी T अमाउंट से खींच रहा है, यहाँ से भी T अमाउंट से खींच रहा है, तो इस पे कितना टेंशन लग रहा होगा, वो होगा 2T. ठीक है, इट्स अ सिंपल एडिशन, हम कर सकते हैं विद सम लाइक इंट्यूशंस. ओके, सो टिल टेंशंस यहाँ पर, बाकी जो जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सीख लेंगे आगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, ये देखिए स्प्रिंग. ओके, सो स्प्रिंग फोर्स इज लाइक, अभी जो स्प्रिंग थी ये अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग थी. ठीक है, अब जो ये स्प्रिंग है, अब इसमें क्या है, इसमें हमने थोड़ा सा इसको खींच दिया है विद सम फोर्स. ओके, तो हमने कितना अमाउंट खींचा है, वी हैव stressed it about the x amount, and this x amount we will call these as, we will call this as elongation. Okay, the amount of elongation x. Okay, और यहाँ पर फोर्स है ना f, और इस फोर्स की वजह से जो x अमाउंट ऑफ elongation इसमें इंड्यूस हुआ है. सो हाउ विल write this, f, this is the spring force which we will write as k into x, where this k is the spring constant. Okay, this k is the spring constant here. For one spring, this k, it should be constant. अगर, हाँ, वो दूसरी बात, अगर आपका मटेरियल सेम है, ओके, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग सेम है, डायमेंशन मीन्स इसकी थिकनेस, इसका मटेरियल, इसका डायमीटर, स्प्रिंग का डायमीटर, अगर ये सेम है तो आपका k सेम होगा. ओके, and the unit of this k is meter per second, right. इतना ही, मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रिंग को खींचोगे, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा दैट शुड बी इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट, और जितना आपने उसको खींचा है, एक्स अमाउंट खींचा है तो x इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके, सो इसमें ये बोलते हैं कि जितना अमाउंट, जितना आप खींचोगे उतना आपको फोर्स देना पड़ेगा. सो दिस फोर्स दैट प्रोपोर्शनल टू द elongation. Okay, so students, that's it for today. From here we will continue in next lecture. Bye.